Good evening. My name is Kishore Ajwani, as I was introduced. We've had one speaker in Hindi, one in English. I'll make it a mix of both. I too am an engineer, but that's not relevant anymore. So let's see. As Sir said, he's 60 plus and the life journey. I'm 56, come from a generation that used to remember phone numbers. Now we don't. Now we don't remember phone numbers because we don't need to. फोन में होता है, नाम डाला, नंबर आ जाता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं. We used to remember, we had to remember. नहीं तो टेलीफोन डायरेक्टरी देखनी पड़ती थी. अब उस मेमोरी की जरूरत नहीं है, तो वो मेमोरी जो है ब्रेन से फ्री हो चुकी है. उसका ब्रेन कुछ और यूज कर रहा है. राजस्थान में हम हैं. There's a community called Bhopal. Many of you might not know. That community, they used to recite a legend, an epic, a 4,000 line poem, the legend of Pabuji. कई रात लगते थे उनको, वो oral recitation करते थे through a pad. A pad was basically a PowerPoint for them with pictures. और रात भर लोग उनको सुनते थे. That community is dying, but ये उनकी कहानी थी. उससे पहले आपने सुना होगा, लोगों को गीता पूरी याद है, लोगों को रामायण पूरी याद है. But Bhopal's community, they were illiterates. वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे. 4,000 line poem वो रात भर सुना रहे हैं. और उस टाइम का वो बिंज वॉच चल रहा है. वो तब का नेटफ्लिक्स है. लोग रात में आ रहे हैं. Many nights. So how is that possible? And why did the art die? Did it die because they too started learning to read and write? To know that, to have that knowledge, you needed to have that person who had that knowledge to give you that knowledge. That person was called the Guru. Dronacharya knew archery, so he had to teach archery. There was no book on archery which somebody could read and learn archery. Eklavya had to listen to Dronacharya. You know that story, right? वो छुप के सुन रहे थे, क्योंकि बुक होती तो पढ़ लेते द्रोणाचार्य की बुक. जाने की जरूरत नहीं थी, अंगूठा ही नहीं कटवाना पड़ता. इसलिए स्क्रिप्ट बनी कि वो जो नॉलेज है उसको कैसे ट्रैवल करवाएं. So that knowledge, that language was turned into symbols. And that is the script. Symbol, it's a code. As tech people would understand, it's a code. It's a code for the language. So you have the code, you write the text in that code. The code travels, as in the script travels, पहले palm leaves पे, stones पे, फिर बाद में books पे. And somebody else reads that book, as in decodes it, and gets your thought. तो वो पूरा याद करने की जरूरत नहीं है और किसी को सुनने की जरूरत नहीं. That was the purpose. So that script was freedom for knowledge to travel, ideas to travel. But it became a prison also. Knowledge got enchanted also. क्योंकि अब आपको कोड पता होना चाहिए, तभी आप वो नॉलेज ले सकते हैं. तो ये कुछ कम्युनिटीज में रह गया, इंडिया में कास्ट्स में,
कि एक पर्टिकुलर कास्ट हैं, 2 पर्टिकुलर कास्ट हैं, 3 पर्टिकुलर कास्ट हैं, बाद में जो कास्ट बनी, उनके पास वो रिटर्न वर्ड की नॉलेज, रिटर्न वर्ड का कोड है, बाकियों ने वो सीखा नहीं, तो नॉलेज वहीं घूम रही इन एन एको चैम्बर. Why am I talking about this? My thing is that people say I'm a journalist, we are journalists, so journalism is the first draft of history. तो जो लिखा जाता है वो हिस्ट्री बनता है आगे चल के. लेकिन अब हम क्यों कर रहे हैं? Why are we continuing with this? अब तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हो सकता है एंड हो रहा है, and now you can travel. Why do you need that script? Okay, you need it for understanding the literature that's been written. But literacy now should not be a prison. जब literacy नहीं थी, people were not ignorant. Knowledge was only in language. Then script came in. When script came in, फिर उसके रूल्स बना दिए, क्योंकि कोड आ गया, रूल्स आ गए, ग्रामर आ गए, स्पेलिंग्स आ गई. हम उसी में उलझ के रह गए. और हम इंडिया में तो ज्यादा ही, यूएस में भी वी विन स्पेलिंग बीज, स्पेलिंग कॉन्टेस्ट हम जीतते हैं, आइडिया कॉन्टेस्ट कोई और जीत रहा है, नोबेल प्राइज किसी और को मिल रहा है इनोवेशन के लिए. हम स्पेलिंग, हमने अपनी एक्सपर्टीज स्पेलिंग बना ली. स्पेलिंग तो कोड है. यू नो, वी बिकेम सच प्रिजनर्स ऑफ स्क्रिप्ट. लैंग्वेज के लिए स्क्रिप्ट बनी थी, कोड को, आइडियाज को ट्रांसफर करने की. इस कंट्री में ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि स्क्रिप्ट से लैंग्वेज बनती है. आई विल टेल यू हाउ. हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता व्हाट इज हिंदी. हिंदी हमारी लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज. हाउ ओल्ड इज इट? हाउ ओल्ड इज आवर नेशनल लैंग्वेज? इज इट अ क्लासिकल लैंग्वेज? वी आर अ thousands of years old civilization. How old is our national language? Not even 200 years old, 250 years old. We don't have any classical texts in Hindi. Who are you? Let's go back to history a bit. शाहजहां ने लाल किला बनाया. शाहजहां had the Mughal army. दिल्ली में लाल किला बनाया. मुगल आर्मी में टर्क सोल्जर्स हैं, पर्शियन सोल्जर्स हैं. मुगल कोर्ट्स में कौन सी लैंग्वेज थी? पर्शियन. तो कोर्ट हैड द लैंग्वेज ऑफ पर्शियन. अब जो सोल्जर्स हैं उनका कैंप है लाल किले के सामने. दैट एरिया इज कॉल्ड चांदनी चौक. फ्रॉम लाल किला टू चांदनी चौक. दोज ऑफ यू हू नो दिल्ली, वहां पे वो कैंप था. कैंटनमेंट, आजकल कैंटनमेंट कहते हैं, वो सोल्जर्स का कैंप. वहां पे जो लोकल शॉपकीपर्स थे मार्केट में, वो लोकल थे सोल्जर्स. अरब्स थे, टर्क्स थे, पर्शियन थे, इंडियंस भी थे, एज इन द लोकल्स भी थे. लेकिन वो दुकानदार भाषा बोल रहे हैं खड़ी बोली. दैट लैंग्वेज कॉल्ड खड़ी बोली. ब्रज भाषा और खड़ी बोली से. और ये टर्क्स कुछ बोल रहे हैं, अरब्स कुछ बोल रहे हैं. अब वो उनके ग्राहक हैं, तो जब वो बोलते हैं तो उनके कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, मिला के एक भाषा इवॉल्व हुई उस मार्केट में. उस मार्केट में एक भाषा इवॉल्व हुई. अब उस भाषा, दैट वाज जस्ट अ स्पोकन लैंग्वेज. देयर वाज नो डेफिनेट स्क्रिप्ट टू इट. देन द ब्रिटिश केम. देयर वाज अ सर्जन. लाइक सर ने कहा ना कि वो इंजीनियर बन के एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, मैं इंजीनियर बन के जर्नलिस्ट बना बैठा हूं. यशु सर इंजीनियर बन के लाइफ कोच हैं. तो वो सर्जन जो था वो लिंग्विस्ट बन गया. हिज नेम वाज जॉन गिलक्रिस्ट. उसने बोला ये जो भाषा है मैं इसकी एक डिक्शनरी बनाता हूं. तो ही मेड अ डिक्शनरी ऑफ द वर्ड्स ऑफ दैट लैंग्वेज दैट वाज स्पोकन outside the Red Fort.
वो डिक्शनरी बनी। अब डिक्शनरी कौन सी स्क्रिप्ट में बनानी, जो स्क्रिप्ट उसकी स्क्रिप्ट ही नहीं है कोई। तो द कोड पे जो भाषा यूज हो रही है पर्शियन और अरबिक, पर्शो अरबिक स्क्रिप्ट की एक डिक्शनरी बनाई उसमें वो डिक्शनरी बनाई और एक देवनागरी में बनाई। सेम डिक्शनरी, सेम वर्ड्स, टू स्क्रिप्ट्स, टू डिक्शनरी। The Hindus took that Devanagari dictionary, that became Hindi. The Muslims took that Perso-Arabic wale dictionary and that became Urdu. Why Urdu? Actually वो dictionary जो थी वो थी Dictionary of Zaban-e-Urdu. Why Zaban-e-Urdu? Because Urdu is the name for the Turkish name for cantonment, camps. It was Zaban-e-Urdu, the language spoken by the soldiers and the shopkeepers in that area. It was the name of the location, not the name of the language. आप कई शहरों में जाओगे इंडिया के, बहुत जगह आपको मिलेगा उर्दू बाजार। That Urdu bazaar has nothing to do with Urdu, the language. That was the bazaar of the soldiers. लाल किले के सामने एक जैन मंदिर है, बिकॉज देयर वर जैन सोल्जर्स आल्सो देयर। उस जैन मंदिर का नाम आपको पता है क्या है? उर्दू मंदिर। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद उर्दू। वो तो उर्दू में था मंदिर, दैट मंदिर एट उर्दू, इट्स अ लोकेशन। उसको उनकी भाषा बन गई जस्ट बिकॉज द डिक्शनरी वाज देयर। सो द स्क्रिप्ट क्रिएटेड अ लैंग्वेज। और अब एंड देन दे ऑल्सो, उन्होंने भी ऐसे पकड़ लिया उसको, द मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो ऐसे पकड़ लिया जैसे कि वो उनकी अपनी आइडेंटिटी हो गई, और हमने भी मान लिया ये मुस्लिम की भाषा है। पंजाबी की स्क्रिप्ट नहीं थी, वहां पे भी पंजाब में भी उर्दू पढ़ाया जाता, तो वो भी उसी स्क्रिप्ट में पढ़ रहे थे। अच्छा, वो जो पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट, दैट्स नस्तलिक कहते हैं उस स्क्रिप्ट को, दैट्स इंडियनाइज्ड फॉर उर्दू, नस्तलिक इज अरेबिक पर्शियन स्क्रिप्ट, ऐसे लिखी जाती है ना। इवन माई मदर टंग इज एक्वायर्ड दैट स्क्रिप्ट, तो इसलिए मुझे भी अपनी मदर टंग तो आती है। आई कैन स्पीक, आई कम फ्रॉम बलूचिस्तान, सिंध, तो आई कैन स्पीक सिंधी, बट आई कांट रीड एंड राइट। एनीवे, तो पंजाब में भी वैसे ही था, उसमें हाफ लेटर्स नहीं होते, आधा नहीं होता स्क्रिप्ट में। तो क्योंकि हम स्क्रिप्ट के गुलाम हैं, तो हमने लैंग्वेज भी वैसे ही बोलनी शुरू कर दी। जैसे अब देवनागरी में अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे, तो अगर आपने इंग्लिश नहीं जानते, जो इंग्लिश नहीं जानते सिर्फ देवनागरी जानते हैं, हिंदी में इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ते हैं, तो वो नेटवर्क नहीं बोल सकते, वो नेटवर्क ही बोलेंगे, क्योंकि नेटवर्क ही होता है हिंदी में। नेट वाला साउंड नहीं है, या तो नाइट वर्क हो जाएगा या नेटवर्क हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, नेटवर्क नहीं होता। There was a doctor, Dr. Berman, who opened a pharmacy. You might know the story. तो वो डॉक्टर बर्मन की फार्मेसी थी, लेकिन डॉक्टर नहीं होता हिंदी में, there's no, you can't write it in देवनागरी, डॉक्टर ही होता है। तो वो डॉक्टर बर्मन, उनकी फार्मेसी डाबर हो गई, the famous company, it's डॉक्टर बर्मन डाबर। पंजाबी में वो उर्दू से पढ़ रहे थे, उसी स्क्रिप्ट से, तो हाफ लेटर्स नहीं होते, तो धर्मेंद्र नहीं हो सकता, वो धर्मेंद्र है। नाउ वी थिंक यू पंजाबी में धर्मेंद्र बोलते हैं, नो, दैट्स बिकॉज दे, जो ओवर द सेंचुरीज, ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स, दे read the language in that script. So a code, now the code is deciding how we speak, how we conduct our lives. Why are we prisoners of the code? इंजीनियरिंग, रेस्टिंग हैलिडे, नेल्सन पार्कर पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश चाहिए ना, लेकिन अब तो ऑडियो वीडियो में बुक हो सकती है, कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है, एंड दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द नेट, दैट कैन एम्पावर सो मेनी कम्युनिटीज।
that they also can get the knowledge which is now restricted only to us guys. Literacy के बाद books, ये सब limiting factors बना लिए. Why can't our country impart all the knowledge that we have through audio video? This is what I think is now come to be. जो बुक्स के जरिए ट्रांसमिट हो रहा था उसकी भी जरूरत नहीं है. So that's for all of us to ponder. वो याद रख रहे थे. वो कैसे याद रख रहे थे? वो 4-4 हजार लाइन की पोएम और वो महाभारत और रामायण, वो rhythm, rhyme and repetition. We put in reading and writing into it. But now it's all unshackled. Now is the time to celebrate the rhythm of the human voice. So it's for your generation, for all of us, to make our voices louder, our scripts loose, and our stories